wishes for the calendar new year. सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडियो वीडियो अगर कोई इशू है तो बताइए, so that I can start the class. Good morning to all. So geomorphology, advanced geomorphology का लेक्चर है, but geomorphology के बहुत सारा बेसिक because of the class rescheduling, I think we were able to do only 4 classes before this. Yes or no? तो जल्दी से रिकैप कर ले, क्या क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है. Can we do that? और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, if you are a beginner who has come here for the first time, you can ask that. Good morning, no questions, just scrolling up to see कोई question है कि नहीं. Happy Navratri Saurabh, Happy Navratri to all of you, Happy Navratri Priyanka, and Happy New Year to all. So not able to do the homework, total homework नहीं हुआ है. बहुत अच्छा homework I think काजल ने सबमिट किया है. किसने सबमिट किया था? काजल बहुत अच्छा किया था उसमें. एंड जो लास्ट वाला है, I think I've given you a feedback on the last one, that in the last one you need to modify the last diagram. उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रहा था. जयंश इज सेइंग सर इज एडवांस क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट. जयंश क्लास अटेंड करिए, ये वाली बात पूछने से पहले क्लास अटेंड करिए, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं, है ना. तो दैट मीन्स तो आप क्लास में नहीं है, उनमें जो भी बातें हुई हैं आज भी सिलेबस दिखा के बात होगी. सो अब मैं इस चीज में वेरी क्लियर, ऑल स्टूडेंट्स हु आर जस्ट कमिंग एंड आस्किंग दिस थिंग, मैं कोई भी ऐसा वाला क्वेरी एंटरटेन नहीं करूंगा जो क्लास में बहुत अच्छे से बताया जा चुका है. यस, रिमेंबर वी हैड अ क्वेरी कि सर अभी तो एलिमेंट्री जियोमॉर्फोलॉजी या क्लाइमेटोलॉजी हुआ, तो उसके बाद वो क्या हो गया. यू कैन सी दैट देयर इज अ स्कीम हाउ बेसिक थिंग्स हेल्प अस अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. इफ यू न्यू क्लाइमेटोलॉजी तो वो भी होगा. तो जो भी किया हो, जैन आपने जो भी किया हो, जब से एडवांस क्लाइमेटोलॉजी शुरू हुई है वहां से देख लीजिए, क्लास में बताया जा चुका है. ठीक है सर, I already did geomorphology in masters. Can I just begin from advanced classes? हाँ ऋषभ जोत, you can do that. और रही बात मास्टर्स की, तो मास्टर्स है. Where did you do your masters? So मास्टर्स में क्या हो रहा है, ग्रेजुएशन में क्या हो रहा है, ये कहानी अलग ही है. But yes, that you have done your basic, you can very well begin from here. And perfectly okay. Department of Geography from PU. Okay. Good morning sir, sorry for being late. It's absolutely okay. So ऋषभ जोत आपके चैनल पे हैं, आपको होमवर्क तो कोई नहीं आता. थोड़ा सा मुझे ये भी पता चले मेरे मास्टर्स वाले बच्चे होमवर्क कर रहे कि नहीं कर रहे, या मास्टर्स में होमवर्क देना बंद हो चुका है. जहाँ तक मुझे याद है, जेएनयू में जब मैं ज्योग्राफी में मास्टर्स कर रहा था, बहुत होमवर्क देते थे, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस देते थे. अभिषेक बोला मास्टर्स वाला फुल रिलैक्स है. वही मैं कह रहा हूँ, आंसर आएगा तभी तो. मास्टर में तो एकदम रिलैक्स ही है. इवन आई वाज रिलैक्स्ड. जेएनयू में बहुत सारी चीजें करने के लिए, एंड कॉलेज में सभी हम लोग रिलैक्स रहते हैं या नहीं रहते हैं. सो इनवाइटिंग ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कोर्स, इफ यू वांट टू क्रिएट वैल्यू आउट ऑफ दिस कोर्स, please make sure that you do the homework submit करना शुरू करो. ऋषभ says yes sir, but I am low on confidence in sending answers. It's absolutely okay. The confidence will only increase when you start sending answers, number one, and second is when you start taking it personally. अगर किसी को आपके आंसर पसंद नहीं आते हैं तो you have to upgrade on that बच्चे. and homework में अपनी इज्जत मत बचाओ. आपने देखा काजल ने अच्छा काम किया, तो अच्छी बात किया. सबका homework नहीं देख सकते, but you know, like she did a good work, and I'm sure that sets a benchmark. It's just that you know the last figure was showing something, you know, like it was not coming across as very clear, तो पोल की तरफ जा रहा था, so that specific input was given. So all of you are invited to make a difference if you are looking at 300 plus score. अगर आप 300 प्लस का स्कोर देख रहे हैं, जो आसान नहीं, which is not easy, and I'm saying these days the examiner has brought it down by 10%, so 270 to 300 अगर आप देख रहे हैं, you will have to take on this challenge of your diagram book, challenge of your essential readings, and my job to take it to the next level. And I'm so glad that many of the students of this batch have already done that. आप लोग भी एक दूसरे को इंस्पायर करके रखते हैं. This Telegram group which has been created, though many people come here, they talk many issues about UPSC preparation, सब कुछ है, but this also comes as an instant support to the current batches of GS as well as optional related to geography, their queries and keeping each other motivated. Apart from that, उसमें और भी चीज क्या ऐड हो जाएगी, environment भी ऐड हो चुका है. So environment as it is starting morning batch on Unacademy 4th April से, परसों से environment भी शुरू हो रहा है. Is everyone okay? So make sure you use this. देखिए बहुत से लोग सिर्फ क्लासेस अटेंड करते हैं. क्लासेस केवल अटेंड मत करिए, वो यूनिवर्सिटी स्कूल में करके देख लिया. You are here to make a huge difference to your selection. तो उसके लिए करिए. और जैसा कि मैंने कहा, सिलेबस तो सारे टीचर खत्म करवा देते हैं, मुझसे बेहतर करवा देंगे यार सिलेबस खत्म करवाना. So we are looking at something more than just completing a syllabus. But syllabus should be our guide. So we are definitely guided by the syllabus. वो आपने देखा है, मेरी हर क्लास पहले सिलेबस से शुरू होती है. तो आज का सिलेबस देख ले. So anyone who started advanced climatology also, there also we started with the syllabus. आपको बताया क्या चीज उसमें करवाई जाएगी. I hope you remember that. इसीलिए मैंने जेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं मैं ले रहा हूँ कि सर कौन सा बचा है, कितना बचा है. क्लास में जो बचा है वो भी बताया गया है, कैसे होना है, एवरीथिंग. तो अगर आप उसमें अलर्ट नहीं है तो आई रिफ्यूज भाई. अगर क्लास में भी अलर्ट नहीं है तो वेरी क्लियर कि अलर्ट लोग इसमें आगे जाने वाले.
ये फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट बेसिक है, हो चुका है। एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो चुका है एवरीवन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट हो गया है, ठीक है। जियो मैग्नेटिज्म हो चुका है, अर्थ इंटीरियर हो चुका है। इज एवरीवन ओके? ये बेसिक में हुआ था। उसके अलावा हमने क्या किया, अर्थक्वेक भी कर लिया। एक जियोमॉर्फिक साइकिल की थी, डेविस की साइकिल, रिमेंबर। फिर बहुत से लोग, मैंने कहा ना, कभी भी मैसेज भेजेंगे, सर कितना हो गया, कितना बचा है, कब बताएंगे? पहले दिन बताया भाई, जाओ क्लाइमेटोलॉजी, एडवांस क्लाइमेटोलॉजी देख लो, बीच में दैट इज नॉट इंटेग्रिटी। तो ये हो चुका है। इसमें जियोमॉर्फिक साइकिल में ये आधा टॉपिक, यहाँ डेविस भी है, पेंक भी है, किंग भी है और वुड भी है, वो सारा बताना है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट। तो ये इनकम्प्लीट, व्हाट इज इनकम्प्लीट, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज इनकम्प्लीट। नाउ वी हैड प्लान्स, यहां तक हम बेसिक में खत्म करना चाहते हैं actually basic should have completed up to this is basic, this is advanced, but because of 2 classes less I was not able to do continental drift, isostasy, plate tectonics and mountain building। इसको कहा जाता है टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी, टेक्टोनिक जियोमॉर्फोलॉजी। इज एवरीवन ओके? in advanced geomorphology I can begin with tectonic geomorphology but I don't intend to do that because tectonic geomorphology के बिना भी हम वो वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। टेक्टोनिक is just a part of that। अब मैं यहां पर आना चाहता हूं, this is a lot of high level things and lot of theoretical understanding is needed। टेक्टोनिक इजी है, टेक्टोनिक इजी है, टेक्टोनिक पॉपुलर है, ट्रू। एंड टेक्टोनिक इज अ लिटिल मोर टुवर्ड्स जियोलॉजी, टेक्टोनिक इज लिटिल मोर टुवर्ड्स जियोलॉजी। सो जियोलॉजिस्ट ने पहले ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उससे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हैरी हेस का आइडिया ऑफ सी फ्लो स्प्रेडिंग, ड्यूरिंग दैट टाइम आर्थर होम्स आइडिया of convectional current, mantle convection, then the ideas of Matthew and Wine when they started studying the ocean bottom, the paleomagnetism that was observed in the geomagnetic ideas over there। तो वो सारे मिलकर they tell us something about continents, their movement, oceans, their movement, plates, what are they, and mountain building and geosyncline। अब ये जो चीजें हैं ये जीएस में भी हो जाती है। So I am taking the liberty of shifting them पीछे ले आऊंगा, वो भी कराऊंगा, that is there, it's not that we are not doing that, but I am taking the liberty of jumping into theoretical ones from the day one of advanced geomorphology। So अगर मैं आज कराऊंगा तो मैं लैंडस्केप डेवलपमेंट से ही शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है। What topics we'll be doing? Landscape development, we'll have words like denudational chronology, channel morphology, erosional surfaces, slope development, so slope development is slope evolution। So ऐसी चीजें मैं अभी से करवाना चाहता हूँ। Is everyone with me? So in these advanced classes that will be there, again I don't know if you have been my student, आपने देखा होगा मैं क्लास को पेस, I don't pace the class with some standard completion of syllabus कि आज इतना करके किसी तरह खत्म करके भागो। You know I pace it according to the student। There are times your doubts compel me कि यार इनको अभी एक आंसर लिखवाओ, get that? So I slow down the class also as required। It's like it is not a ready-made like burger being delivered, it's a customized, create your own burger। So my classes are customized। That is why I strongly recommend to all my students, यार आपको क्लास करनी है तो करंट बैच किया करें। करंट बैच में आपकी स्पीड से वो कस्टमाइज होता है। पुराने बैच में मैंने क्या कराया सच में मुझे भी नहीं पता होता। That was a different batch, that was a different set of students, they were equally amazing, but we created a totally different edifice for them। आप लोगों के लिए अलग चीज होती है। So every batch is unique for me, I want to keep it that way because that keeps me inspired। वरना वही चीज जाकर मेंढक की तरह टर I don't like that। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स भी इतने मैकेनिकल नहीं है, so they are looking at that, ठीक है। Yes sir, that's why the reason the classes feel like offline class। So कोशिश यही होती है पूर्वी, it is not about online or offline, it is about results they produce। So that is why if you ask my previous batch student, जो मैंने पहला बैच शुरू किया था अनअकैडमी पे, they started with 0 on that telegram group, we started with 0 on that telegram group, now we are 2500। so they are the early ones। we said उसके बिना काम कैसे चलेगा? If I am giving you work and I am not able to see your work, I am not able to review that, I am not able to give you suggestions, how do we work on the online mode? So that is why we created that। and it is not about people जो बाहर से जुड़ते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, I am talking about you, make use of it and participate in that, ठीक है। तो ये हुआ आपके लिए, सब लोगों के लिए। व्हाट इज द स्कीम ऑफ थिंग्स, पहले एडवांस ये होंगे। आई थिंक वी विल डू दिस इन 4 to 5 lectures, then we will go into tectonic geomorphology। this will also take 2 to 3 lectures। ideally I am looking at a scale of around 8 lectures to come into this and 4 had been before, so 12 lectures होने चाहिए। the lecture plan may not be showing 8 right now, so we will have to create some more classes। and as you know that जब तक सिलेबस नहीं हो जाता मैं उन क्लासेस को कहीं छोड़ने वाला नहीं हूं, तो एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगी। बट दैट डज नॉट मीन वी विल गो फॉर 600 6000 क्लासेस वही 60 to 70 रहनी चाहिए। so that is the overall scheme of things of paper 1। 60 to 70 lectures में we generally finish that। I think पिछले बैचेस में हमने 65 lectures में खत्म किया है पीजीसी और एचजीसी। इस बार we are looking at 70 something of the range of 70s। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इंटेंशन ये है पेपर 1 should be completed by May and paper 2 will start post prelims। बीच में आपको गैप भी दिया जाएगा। और एक फाउंडेशन का मैंने प्रपोजल दिया है। I've given you a proposal for a foundation if you are interested in that, a foundation based on NCRTs। we had a foundation of GC Leong, you will also have the advantage of the NCRT based foundation। so when that time comes we will announce that also and that will be unique for this batch। पिछले बैचेस में वो नहीं हुआ है।
पूर्वी हमेशा बहुत से लोग कहते थे ज्योग्राफी मेक सिंपल भी, मैंने कहा ज्योग्राफी मेक सिंपल के टेकर्स कम होते हैं। चलिए, तो आज मेरा इंटेंशन क्या है? Today's intention, so advanced geomorphology, when we are starting with advanced geomorphology, session 1. I want to go into the idea of study of landscape and landscape evolution. Okay. In this, I will take some theoretical ideas. Okay. And second is, when we are going to do, this will be exam-centered ideas. So one is theoretical in the books, those are there. We will appreciate them. We will say, okay, that is there. Exam-centered ideas. This exam mein kya puchega? We will go for that also. And there would be a homework in this, as you know that in my classes homework rehta hai. There will be certain diagrams which you will be given, and there would be certain dictionary work bhi aaj milega. Okay. So this is going to happen in geomorphology. I have seen geomorphology's questions are perennial questions. Perennial means every year they will be coming. Exam mein geomorphology question is a guarantee. But the trick lies or the catch lies in the fact of the language of the question. If you remember Bosch and Halt and Hang, मैंने ऐसा कुछ आपसे discuss किया होगा, the terms which they had used, the German terms and all those things when I showed you the questions. So that makes the question challenging. So उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? We will be going into the dictionary work. We will be going into the dictionary work to stay aware and not be foxed by the examiner. इसके साथ में I would also like to go to certain basic concepts which are often ignored, but because the examiner is asking those questions, so that is there. So number one is landforms. Fluvial, glacial, ebolian, coastal. And can I put a tick mark on that? Already done. My class has already done that in basics. So we'll not repeat that. You done it? Good. Weathering. Chemical, mechanical, biological. Can I put a tick mark on this, everyone? If these basic concepts are not completed, no, the advanced will have problem. So students who have not done that, मैं क्यों बता रहा हूँ advanced में? So if you've joined in from here, there has been an exhaustive work which has happened in the foundation where the teacher also did and amazing students also did that. और उन्होंने group पर भी डाल लिया अपने landforms में, they are comfortable. The book that we used here was GC Leong. The book that we used here was GC Leong. You all made diagrams and you are comfortable, you are confident with that. In case you missed that, ये काम जरूर करिएगा. ठीक है? आज का काम इसी foundation से, the homework is the dictionary work. जैसे if I'm talking about mechanical weathering में all terms related to different types of weathering, ये list बनानी है, list बनाकर उसका explanation चाहिए, homework है. Example दे रहा हूं. Two big things will collide with each other. Collision, yes. Rubbing past, friction, corrosion, yes. Braking, yes. Then there was this नीचे जो चलता है attrition. Have you heard this word? Abrasion, attrition नीचे जाएगा तो abrade करेगा, attrition भी करेगा. वहां पर ice में क्या है? Plucking. Remember that? Plucking. So वो वाली चीजें मुझे चाहिए. Advance of glacier, retreat of glacier. Do we get that? Can we have that term? All the terms related to different types of weathering. Chemical weathering, mechanical weathering. Chemical weathering में क्या है? Example दे रहा हूँ. Oxidation, hydrolysis, ऐसा है? Reduction, hydration बिल्कुल ठीक है. Are we getting that or not? Calcification, exfoliation. ये मैकेनिकल में था, exfoliation. So पहला काम क्या करेंगे? List. Everyone, this list should be there. Again saying, I am looking at a very good source in geomorphology and I am going in a structured way. Basic भी होगा, advanced भी होगा. There will be nothing left for you to fear कि यार ये मुझे नहीं आता. And I am just expecting from serious students कि वो cooperation करेंगे. एक तीसरी चीज थी mass wasting. ये नहीं किया, ये आज कराइए. Is everyone okay? This is to be done today. तो बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा. इज एवरीवन ओके? मास वेस्टिंग का होमवर्क क्या है? मास वेस्टिंग का होमवर्क इज डायग्राम. टुडेज होमवर्क इज डायग्राम्स ऑफ मास वेस्टिंग. इज एवरीवन क्लियर? द क्लास व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड? वेरी वेरी क्लियर. इसमें जब कभी मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता सर क्या करना है, नो मोर एंटरटेनमेंट भाई. पहला जो हमने 20 मिनट्स explaining what is advanced geomorphology about, what is today's class about. This is advanced geomorphology session 1. We'll be talking about mass wasting. We will be talking about study of landscape and landscape evolution also. Is everyone okay with this? एक वर्ड है जिससे मैं पूरी प्रोसेस शुरू करना चाहता हूं. आई वांट टू स्टार्ट टुडेस क्लास विद अ वर्ड. ये एग्जांपल्स है. अनदर एग्जांपल ऑफ द वर्ड हियर इज, से फॉर एग्जांपल, denudation. है ना? हैव यू हर्ड ऑफ denudation?
डेन्यूडेशन, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन यूज करेंगे, डिक्शनरी से काम होना है, ठीक है। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, और बहुत से लोग अभी भी होंगे सर डिक्शनरी नहीं है मेरे पास, ऑनलाइन ऑफलाइन जिनके पास है वो काम करना शुरू करें, वेरी क्लियरली फर्स्ट लिस्टिंग एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। वो बहाना चलता रहेगा सर ये नहीं है वो नहीं है, सो दैट कैन कंटिन्यू। सो लेट मी आस्क यू अबाउट दिस प्रोसेस, व्हाट इज डेन्यूडेशन? ये डेन्यूडेशन है क्या? डेन्यूडेशन इज अ कलेक्टिव term, a blanket term, an umbrella term. An umbrella term for what? Umbrella term for something that will happen to a landform which has been created after endogenetic forces have happened. So Jayansh is saying breaking of rock. तो ये एकदम गलत आंसर है Jayansh, इसीलिए बता रहा हूँ। मैंने कहा ना, काम हम करते नहीं है ना, हम ध्यान दे रहे हैं क्लास में, हम सिर्फ उसी पर कर रहे हैं। There are students who are just attending the classes, उससे आगे बढ़ना है। सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है? Weathering. A landform is there. A landform is there. It is attacked by agents of erosion. Attacked by agents of erosion, whatever fluvial, aeolian, glacial, and it will cause this rock to break in situ. Disintegration of rocks is weathering. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नीली ध्यान दीजिए, टेक्निकल बात कर रहा हूं। जो आपने लिखा, everyone is talking about GC Leong. I am taking you to the next level, everyone. I am taking you to the next level. Now these things are at a high level. Do they have potential energy? They will come down. They will come down. Where are they headed? They are headed to a place called the lowest level. What is the lowest level? Base level. The process that moves the weathered material downhill. Mass movement, mass wasting. आज इस पर बात करेंगे। आगे नीचे मास मूवमेंट। अब यहां पर क्या हो रहा है? समथिंग इज बीइंग ब्रॉट, विल इट डिपॉजिट हियर एंड विल इट बी टेकन फर्दर टुवर्ड्स दिस? यहां पर क्या हो रहा है? थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सर इरोजन तो आया नहीं, इरोजन सब जगह पर चल रहा है। Is everyone okay? Weathering and erosion you've understood? Weathering and erosion is denudation. Denudation is weathering plus erosion. Okay. But erosion, when we are looking at, erosion starts from the top only. But the thing that brings down from the mountains, that is mass wasting, and in the process what is happening? Transportation and deposition is happening. You will find that some books will consider this as erosion. Erosion involves the transportation and deposition of weathered material. Chalega? Can we keep our mind open on this? Let us look at the dictionary. Let us be clear on that कि क्या dictionary कह रही है वो साथ में रख लिया, but have a big picture also in our mind. Is everyone okay? So do we get the idea of denudation? What is denudation? A bigger process. A bigger process. अब मैं आना चाहता हूँ. Today I will be talking about mass wasting. I'll be talking about mass wasting. But before that, I want to come to landforms. So what is a landform? हम पहले भी बात कर चुके हैं landform. Can I say this is a landform? Can I say this also is a landform? This is a landform and this also is a landform. और अगर आपको याद हो फ्रॉम द बेसिक मटेरियल आई टोल्ड यू ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? मैक्रो लैंडफॉर्म होते हैं ना। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? व्हाट आर द फर्स्ट ऑर्डर? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। लिखवाया था, मटेरियल मिला आपको, स्टडी मटेरियल, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। फिर उसके बाद उससे छोटा हो जाएगा, ऑन द कॉन्टिनेंट व्हाट डू यू सी? माउंटेन रेंजेस, ह्यूज माउंटेन रेंजेस। इन द ओशंस व्हाट डू यू सी? ओशन बेसिन्स। यस और नो? सो सेकंड ऑर्डर माउंटेन रेंजेस एंड ओशन बेसिन्स। ऐसा बताया कि नहीं बताया स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स हो रहा था? इफ यू रिमेंबर दैट, स्कॉलर का नाम भी बताया था किसी का? इफ समबडी रिमेंबर्स, किसने दिया था क्लासिफिकेशन? तो इफ यू डोंट रिमेंबर इट्स ओके, 4 क्लास की रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नॉट टू मेक यू फील इनकम्प्लीट, द आइडिया इज दैट यू कमिंग फॉर एडवांस होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम फिफ्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म पे आएंगे तो ये हो जाता है आइसोलेटेड हिल्स। कैन आई से ये फिफ्थ ऑर्डर लैंडफॉर्म? आइसोलेटेड हिल, सैंड माउंट और समथिंग लाइक दैट हो सकता है। डू वी हैव और नॉट? और यहां पर क्या बन रहा है? छोटा सा पीडमोंट कुछ बन रहा है, पीडमोंट फीचर। क्या मैं कह सकता हूं ये इनसेल वर्क मत करो मधुकर, डराओ मत मुझे, ये तो माउंटेन के नीचे बना ना पीडमोंट, इसे क्या कहेंगे? डेब्रीज, द ब्रोकन पार्ट। कैन आई से डेब्री का कुछ कलेक्शन, डेब्री पाइल बोल दूं इसको मैं, चलेगा? So everyone who's come for my class today for advanced geomorphology, are you okay with the vocabulary that I'm using right now? इतना वर्ड आता है या नहीं आता है? ये आना चाहिए। एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट मास वेस्टिंग। वेदरिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदरिंग, हम बहुत बात कर चुके हैं एंड आई हैव गिवन यू एज होमवर्क। इज एवरीवन ओके? डेब्री पाइल नहीं समझ में आया? डेब्री का मतलब टूटा हुआ जो टुकड़ा है, पाइल मतलब उसका ढेर। यस, अ पाइल ऑफ डेब्रीज, एंड वी विल अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट इट। वी विल बिकम फ्रेंड्स विद डेब्रीज, डेब्रीज से थोड़ा फ्रेंड भी बन जाएंगे। एवरीवन ओके?
चलिए तो थोड़ा सा अब हम थ्योरेटिकल हो गए फॉर हाफ एन आवर बी थ्योरेटिकल विद मी एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल नो दिमाग इन दिस कुछ चीजें मुझे भी तो थ्योरेटिकल ये तो स्पेलिंग ही रॉन्ग है समथिंग आई शुड आल्सो डिफाइन फॉर यू theoretical approaches to study landform theoretical landform study ठीक है तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है एक बार फिर से याद दिला रहा हूं जियोमॉर्फोलॉजी व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी अर्थ शेप स्टडी इज एवरीवन ओके सो अर्थ सरफेस नॉट इनसाइड स्टडी ऑफ shape of earth surface है ना what is shape of earth surface what is it made up of it is made up of landforms it is made up of landforms if you remember landforms हमने देखा continent is a landform ocean is a landform mountain range is a landform ocean basin is a landform true or not mountain range if I'm looking at that can be that island is a landform yes so all those things hill is a landform so in सबकी study is what geomorphology is ठीक है अब कैसे पढ़ती है जियोमॉर्फोलॉजी कैन स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ दिस पढ़ सकता है वन अप्रोच इवोल्यूशन सेकंड अप्रोच कैरेक्टरिस्टिक्स पॉसिबल एवरीवन विद मी आई एम टॉकिंग अबाउट से फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ फेमस पर्सनालिटी if I say we are studying Mahatma Gandhi evolution what made Gandhi what he was somebody can say characteristics of Gandhi possible or not is it possible yes or no third one can say what was the processes that made Gandhiji what he was so this is the geomorphic processes can I say all these if I know all these are the objectives of study of landforms yes so what as a geomorphologist you should do how did they evolve what are the characteristics and which processes are there एक सेंटेंस याद दिलाना चाहता हूं all landforms are a function of क्या चीज है तीन चीजें जल्दी बताओ SPS वेरी गुड स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज किसने कहा डेविस ने कहा SPS छोड़ दूं स्ट्रक्चर प्रोसेस स्टेज डेविसियन ट्रायो लिख दूं इसको डेविसियन ट्रायो तीन चीजें करते हैं सो एज अ जियोमॉर्फोलॉजिस्ट आई मस्ट नो दैट यस आई मस्ट नो दैट तो मैं ये करने वाला अच्छा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचर्स दे हैव देयर डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट थिंग्स कुछ टीचर्स हर चीज का फ्लो चार्ट बनाते हैं यस यू लव माइंड मैप्स यस नो ये वेब बना दिया दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट सो कैन आई से द objective can be achieved by describing landforms can it be achieved by this I describe them so I describe what is the evolution what is the characteristics what is the geomorphic process can I say GC Leong has done that with examples किया कि नहीं अच्छा किया that is what you've already seen that has already happened ठीक है GC Leong ने एक और चीज किया classification similar ones को क्लासिफाई किया कैसे क्लासिफाई किया जीसी लियोंग ने इफ यू रिमेंबर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर नहीं इरोजनल फॉर द फर्स्ट हाफ एंड डिपोजिशनल फॉर द सेकंड हाफ रिमेंबर दैट can I say GC Leong has very well done that but the problem is it has not done too much of explanation true or not explanation of landforms कहां पर आता है थोड़ा सा GCL and NCERT have done it but low कहां पर आता है सविंदर सिंह can I say सविंदर सिंह does that too much of elaboration ये क्या कर देता है too much कर देता है in fact I feel सविंदर सिंह confuses explanation with description वो एक्सप्लेन करने की जगह कहां पर चला जाता है डिस्क्राइब करने पे ही स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग टू मच ऑफ डिस्क्रिप्शन टू मच ऑफ क्लासिफिकेशन यू वंडरिंग क्या यार सिंपल थिंग है इट इज इजी एक्सफोलिएशन ही तो बता देते क्रिएशन ऑफ एक्सफोलिएशन डोम because of differential expansion and cooling of different layers the layered rocks actually peel off the layers separate and they peel off and that is called exfoliation ऐसे ही कुछ बताना चाहिए था इतना बता दो काम है बट वो क्या करेंगे बहुत सारी बातें करेंगे डिस्क्राइब करने लगते yesterday video which I shared with you about the temperate cyclone वो वीडियो ने 6 मिनट्स में पूरा सब बता दिया if you look at सविंदर सिंह सब बता रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है समझ नहीं आ रहा है एक्सप्लेनेशन में लो true I find that book is very descriptive and can I say descriptive books will always be thick and can I say description is not a very high order intellectual thing
So that's there, करना तो पड़ेगा. Description is the first step. पहला क्या है? Description is identifying what is the issue. पहले तो can I say description is actually field work. Get it? So my son wanted to know something before the class started. So I said, हाँ बताओ क्या है? So he said, you know that happened on that day. स्कूल में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ. He said something. He continued talking something for 3 minutes. I said, सुनो, मेरी क्लास शुरू होने वाली है. Can I have the summary? Do you get that? What was the problem? What was he doing? Describing. I said, either we talk in detail after class. Class के बाद I will have a lot of time. Then you can tell me all the sequence of events. But अभी थोड़ा सा summary. Then he thought and then he quickly said, अच्छा ये पापा इसमें हुआ था, ये मैम ने कहा था. This was in the book. Classification. Can I say classification simplifies it? Is everyone okay? बहुत सारे line forms हैं, huge diversity. उन सबको छोटा कर दिया. In fact, I believe G.C. Leong has done a better classification than Savinder Singh. Savinder Singh बहुत सारा करता जा रहा है यार. It is more of a description. He is not able to classify. True or not? Absolutely okay. Everyone must understand what is description and what is classification. Can I say your history books, NCERT history books are just describing. They are descriptive books. बहुत analysis नहीं. Analysis कहाँ पर आने लगता है? जिन books में आता है, then those books are being challenged. नहीं इसने ये वाला analysis किया and all that. Yes. Then history optional students will suffer from that proliferation of interpretation. No, that historian said this historian said that. Thankfully, history is not your optional. Yes. Problem ये है कि explanation कम होता है. So when my son comes to me, my son is describing or classifying, but he wants explanation from me. कि why this happened? Do you understand? Scientifically, what are we looking at? We require explanation. So Kushi is saying spectrum, 800 pages, only modern history. And I'm very sure spectrum, if you've read spectrum, spectrum is describing and the box items are classification. Are there classifications? Box mein batata hai, all the peasant movement, all the tribal movement, that is it. So what kind of a book is spectrum? Describing and classification. Is everyone okay? Yahan tak clear? Ab explanation has a problem. Explanation itself has a problem. Explanation आती है किस किताब में? Geography made simple. अरे यार पूछो मत सर, ना कोई डायग्राम है, ना क्लासिफाई करता है, सीधा एक्सप्लेन करता है, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता. Do we get that? सर वो समझ नहीं आती, because he's directly explaining. So actually what we want is a mix of all three. अगर तीनों मिल जाता ना सर, जन्नत वही है सर. So what is the job of the teacher? Job of the teacher: descriptive, classification and explanation. अच्छा, which one student can do himself or herself? Description, classification. वो थोड़ा पार्ट उसको प्रमोट करो होमवर्क में. Can you do that? Mechanical part. हाँ सर वो मैं कर लेता हूँ. And correct to what they have done and bring in explanation. So that is what is going to happen. Sir, हम क्यों बात कर रहे हैं? This is what geomorphology, the way or the I would say geographer, when he studies landforms to achieve the objective, these are the methods that he has used. ठीक है? Methodology of this. Is everyone okay? इन मेथड से वो करता है. ये टूल्स हैं, आपको बुक्स भी समझ में आ गया होगा. Explanation part is about why and how. I also believe explanation is akin to, equivalent to answer writing. A person should not start answer writing from day one. They know the field work, know what is it, what all is it, classify them, and then go into answer writing. That makes more sense, because otherwise that doesn't happen. Is everyone okay with this? यहाँ तक clear है? ठीक है? But फिर भी I want to, and since remember I'm talking about theoretical landform study today, so I have to give you some theoretical things also. So please don't mind that. कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, लिखते रहिए. They will help you. So approaches to geomorphic study. So जो geographers ने कैसे उसको study किया है, so we are looking at that also. Number one is historical approach. Historical or chronological approach. What is historical approach? पहला तो ये है कि this is descriptive. Description of landforms across geological time. No, I did not say listing. मैंने क्या सिर्फ describe करें. Get it? Can you describe a box in your room? Can you describe a table in your room? Yes. Can you describe a box in your room? Can you describe a table in your room? Get it? Can you describe the table which your great grandfather used? I have not seen the table. If I have not seen the table, how will I describe it? No, you heard it from someone. Sir, heard है तो actually मैं वही करूँगा. True. मुझे ये नहीं समझ में आता. How would you describe Aravallis when you did not see geology Aravallis before? Problem with historical approach or not? So यहाँ पर हम फिर क्या यूज करते हैं? Uniformitarianism. Oh, whatever is today पहले भी था. So if Himalayas are fold mountain, Aravallis were also fold mountain. So in the past Aravallis were high and mighty. ठीक है, perfectly okay. कुछ चीजों के लिए हमारे पास evidences होते हैं, past evidences. We call this method.
The method is called denudational chronology. Denudational chronology. Remember अमित शाह की chronology, वही वाली chronology कि we will find the chronology of events. कैसे पता चलेगा? If this is Aravali today, go and look at the sediments next to it. तो ये जो नीचे वाले sediments हैं, ये सबसे पहले erode हुए होंगे. उसके बाद the next ones. So do the chronology of it, find the sequence, and if you find that these sediments look fluvial and these sediments look Aeolian, that means in the past, Aravallis was impacted by more fluvial processes. It was more in the humid regions, but today it is in the dry regions. Possible or not? अच्छा guess है, no doubt about that. That's a good guess. True or not? But then there is a problem in this. There is a problem in this. The problem is you are assuming everything has been stable like this throughout. एक layer आया, दूसरा layer आया, तीसरा layer आया. Don't you think tectonic things, endogenetic things, exogenetic things, they keep on mixing and changing everything? There's so many things. You're just going on certain samples and you're going with that view. तो ये अब आपने क्या किया? आप क्लाइमेट पढ़ना चाहते हो, पास्ट का क्लाइमेट, तो आपने एक ट्री ट्रंक, ओल्ड ट्रीज ले लिया. एंड डू यू नो ट्री के सेंटर में रिंग्स होती है. एवरी ईयर ट्री डेवलप्स अ रिंग. तो उसका रिंग का थिकनेस से भी telling okay, climate would have been like this, see the thickness is more, so that means the tree was growing more during this time, that means it must have been a good season, that year was good rainfall, that year was good heat and everything, and then there is a thin region. So हम उससे guess करते हैं. Possible अभी guesses सही निकलेंगे, गलत निकलेंगे, who knows, and then things change. अच्छा एक और बात बताओ, where are the preserved landforms? कहीं पर पड़े हैं क्या? Which landform is an untouched landform today? है ही नहीं. So everyone, we have in our syllabus this term called denudational chronology. अगर आपने ध्यान नहीं दिया, I'm not just telling you stories. I'm talking about things which are a part of our syllabus. Denudation chronology, channel morphology, they are a part of our syllabus. I'm just trying to today theoretically situate everything. क्या चीज कहाँ का किसको belong करती है? So this belongs to the historical chronological approach. It has its own question marks. The sequence is bound to change. There is no guarantee that the sequence will remain unchanged. These indirect evidences may be correct, may not be correct. And where do we have these preserved ones? Is everyone okay? Second approach is called, ठीक है, history छोड़ दीजिए, तो field survey करते हैं. Let us do field survey. The present one, can we check them? So this is called quantitative and empirical approach. Let's look at the present one, quantitative and empirical approach. I'm sure you did not read this geomorphology in any of the NCRTs. So this is higher theoretical geomorphology. So what is quantitative? Quantitative involves measurements of different landforms and their landscape. Measurement करिए and उनका quantitative interpretation. ठीक है? Say for example, so there was this mountain and a V-shaped valley was created. V-shaped valley is created. There is a deeper valley over here, yes, and there is a U-shaped valley over here. Measure them. Who would be doing it? Probably a river is doing it. So find out the sediment load of this river. Find the velocity of this river. Find out the stream order. अगर आपने if you have read geography made simple, तो आपने देखा होगा stream का order होता है, main stream, छोटू stream, अलग-अलग classification है, stream order 1, 2, 3, ऐसा होता है नहीं होता है? पढ़ा कहीं पर ये? शोरले का है, बाकी लोगों का है, this is 1, 2, ऐसा कुछ बनाया क्या? तो ये सब quantitatively interpret करिए and all those things. Now challenging or not? Quantitative method. And आपको लगता है geographer ऐसा होता है? Geographer ऐसा होता नहीं. Geography का काम क्या है? Describing Earth's surface. It is like many of you, moment you look at the seaside part, you run away. So geographer, moment he looks at all this, भाग जाता है. यार ये तो बहुत नापना पड़ेगा. So historical approach, ये कहानी है. Quantitative approach, actually going into the field, and at times it so happens that you have so much of data you don't know what to do with it. So geographer easy वाला काम करता है. कौन सा काम करता है? Regional approach. Remember, we are where? Regional approach. So in this, he studies the assemblage of landforms. Assemblage of landforms. सर ये क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट है. अरे all landforms of an area, उनको फैंसी इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? Assemblage of landforms. Is everyone okay? All landforms of an area will be called assemblage of landforms. ठीक है? He studies the assemblage of landforms over spatial units. Macro, meso, micro.
ठीक है, तो आप लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं बड़े एरियाज में, से फॉर एग्जांपल लैंडफॉर्म्स ऑफ एशिया, लैंडफॉर्म्स ऑफ साउथ एशिया एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। डू यू अंडरस्टैंड? रीजनल अप्रोच, तो उसमें सब बताता है वो लैंडफॉर्म क्या है, कैसा है। एंड मोस्टली ज्योग्राफर इज समहाउ वेरी डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी इन दिस, डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी ज्यादा है, एनालिटिकल कम। Though he will say, like this is a shield. Remember, Chota Nagpur plateau is a shield. Karnataka plateau is a shield. So he will talk about that, but regional approach, the focus is more on region. अब मुझे क्या चाहिए? I am interested in ये वाला तो historical approach तो temporal है, yes or no? I am not quite, like geography is not my domain. मतलब when it comes to historical description, वो history का domain हो जाता है, but ठीक है, some of them approach that. But I am interested in this. I am interested in this, but I find this very difficult, very mathematical, and I am also interested in this. And I also want cause and effect to happen. दोनों चीजें चाहिए. So comes the fourth approach, which is the last one, systems approach or systematic or functional approach. What is systematic or functional approach? So it studies or analyzes, the analysis way, analyzes the geomorphic processes, its functional role in creation of landscape at small and large scale, both spatial and temporal. सब मिला दिया। Recent landforms, old landforms, small area landforms, large area landforms, study and analyze all of them. That is the systems approach. Is everyone okay? तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? दो अप्रोचेस हैं इसमें। एक है प्रोसेस फॉर्म अप्रोच। What is process form approach? Which process is creating which form, which landform? Say fluvial landform, V-shaped valley, glacial landform, U-shaped valley. Is everyone okay with process form approach? Process and what form it gives, that is that. And I also have structure form approach. Structure form approach. So even structure controls, remember landform is a function of structure process stage, yes or no? तो वो भी कंट्रोल करता है. So can I say the landforms of sedimentary rocks and landforms of igneous rocks, will they be different or not? Sedimentary rocks easy to erode, yes. Say for example the river valleys or river landforms in North Indian plains are meanders, are oxbow lakes, true. But in peninsular India we don't find too much of meandering of rivers happening. We do not find too much of oxbow lakes. समझ में आ गया? Process form approach, structure form approach, systematic approach. So which one do you think is the more advanced one, जिसमें ज्यादा आपको समझ में आया? तो सारी अप्रोच है. एक लंबी गहरी सांस लो. Look at what you have written till now. Look at what you have written till now and tell me, are you comfortable? This is theoretical. तो हमें पहले तो वर्ड्स यूज करने आने चाहिए. Can we use our words? Assemblage of landforms, macro, meso, systematic approach, process form approach, structure form approach. True? कर सकते? Not that you have to remember them. Do we understand historical chronological approach? तो क्या इसे denudation chronology इस अप्रोच में आएगा? और क्या मैं ये कह सकता हूँ cycles of erosion या slope evolution theories, डेविस की, पेंक की, वो सब किसमें आएंगी? Systematic approach में आ जाएंगी. Do you get that, everyone? First of all, I wanted you to understand this broad use of vocabulary which you will find in the books. जब आप बुक्स पढ़ते हैं, why does it happen sometimes, when you're reading books like geography made simple, you are a little lost because वो बहुत subtly बिना बताए वो यूज करेगा. Process form approach से ये होता है, structure form approach, systematic approach, regional approach, and you don't see the meaning in that. So as a result, he is writing less and saying more, and for you are getting less to understand. यहाँ तक clear? चलिए तो थोड़ा सा रेस्ट देता हूं आपको. लेट मी गिव यू रेस्ट फ्रॉम एन एडवांस वन. आज हम बेसिक कौन सा पढ़ने वाले हैं? मास वेस्टिंग. एंड मास वेस्टिंग के बाद मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको? स्लोप इवोल्यूशन. तो वो भी आएगा. स्लोप की थ्योरीज है, वो भी स्लोप रिलेटेड आइडियाज विल बी कमिंग. बट टुडे आई वांट यू टू टेल मी एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट मास वेस्टिंग. रिमेंबर ब्रेनस्टॉर्मिंग. जो भी आपने पढ़ा अभी तक, कुछ भी आपके दिमाग में आता है, जल्दी से बताएंगे. व्हाट इज मास वेस्टिंग? आई एम गिविंग यू 1 minute and I have already told you. I hope by now you understand. Mass wasting, brainstorming is the way to give you original ideas. Nobody to type. Take a fresh page, write mass wasting, and for 1 minute, पूरा गिन के 1 minute रख रहे हैं. And I would want to check after we have studied mass wasting, what was your brainstorming like? ठीक है, जल्दी से. Quick
quickly, 30 seconds left. Whatever you know about mass wasting. Okay, everyone, please stop. Please stop. So I want, this was a brainstorming at the beginning, and we will do one more round of brainstorming after I have discussed the concept of mass wasting. Okay. Whatever you've done, keep it as a benchmark. If you are listening to me on recording, anyone who is missing the live classes, first of all, prefer live classes. If you are missing the live class for some reason, make sure you do the exercises the way they are. Then only you will be able to create the results which are being created. Is everyone with me on this? So can I say mass movement, also called as mass wasting, refers to the downward hill slope movement under influence of gravity. True. तो ये वर्ड कहीं पर आना चाहिए था इन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग. डाउनवर्ड होना चाहिए था. हिल स्लोप इफ इट इज नॉट इन योर वोकैबुलरी, ब्रिंग हिल स्लोप, एंड ग्रेविटी होना चाहिए था. ठीक है. अच्छा, दिस मूवमेंट इज फैसिलिटेटेड और एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन थिंग्स. क्या इन्हें एक्सेलरेट कर सकता है, जल्दी से बताओ. आई थिंक प्रेजेंस ऑफ अ form of, say, in lubrication. Very good. So water, even ice, any form that causes things to move. No, एजेंट ऑफ डेन्यूलेशन की बात नहीं हो रही पूर्वी, इसीलिए कह रहा हूँ ये डिफरेंट है. अब यहाँ पर ये नहीं है कि रिवर इसको लेकर आ रही है. सो दिस इज नॉट रिवर सेडिमेंट्स. हिमांशु, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट प्रियंक विंड और रिवर. आई एम सेइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी धीरे धीरे आ रहा है. इसीलिए बताया मास मूवमेंट इज नॉट सेम एज इरोजन. मास मूवमेंट पहले ही बता दिया कि मास मूवमेंट इज इन्वॉल्विंग सर्टेन थिंग्स, बट इट इज नॉट दैट कि वो रिवर के साथ जो पानी आ रहा है वो है. ठीक है. तो हुआ क्या है कि द रॉक हैज पहला डिसइंटीग्रेटेड, टूट गया. किसने किया? वेदरिंग. उसके बाद इट गॉट डिटैच्ड एंड बिकॉज इट इज एट अ हाई प्लेस देयर इज गोइंग टू बी अ डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ व्हाट. अगर बड़ा टुकड़ा है तो बोल्डर हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, बिग ब्लॉक. विल इट मूव और नॉट? ट्रू. अभी जबरदस्ती नीलनी इम्परवियस लाया. अरे बेटा, रॉक टूट के अपने माउंटेन से अलग हो गया, मेन उससे. नाउ दिस हैज ब्रोकन डाउन एंड ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन इट और नॉट. सो दिस इज बोल्डर ब्लॉक. इसमें जबरदस्ती इम्परवियस क्यों लेकर आ रहा है? सिंपल चीजें बता रहा हूँ बच्चे, वेरी वेरी सिंपल थिंग. और क्या हो सकता है? आपने सुना स्क्री एक वर्ड होता है, टालुस एक वर्ड होता है, डेब्रिस एक वर्ड होता है. सुना है नहीं सुना है? ये नहीं सुना है तो आज बच्चों डिक्शनरी जरूर देखना. Remember you heard about moraines, you heard about sand, silt, clay, gravel, cobble, pebble. उसी तरह से boulder, block, screed, talus, debris यूज होने हैं हमारे काम में. Can we see that? आज देख लेंगे अपने डिक्शनरी वर्क. पहले बता दिया आज का डिक्शनरी वर्क सिर्फ खेल वाला काम है. ये वाली वोकैबुलरी, व्हाट इज बोल्डर, व्हाट इज ब्लॉक, व्हाट इज स्क्री, व्हाट इज talus, व्हाट इज debris. ठीक है. सिर्फ सेडिमेंट से ब्रोकन माने उनके साइज है, उनके हिसाब से चलेगा. ये सुनो. और ये डाउन स्लोप मूवमेंट है ड्यू टू ग्रेविटी. सो एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वाटर एंड विंड ब्लोइंग समथिंग. मास वेस्टिंग का नेचर समझ में आया? जो भी ऊपर इरोड हुआ उसको नीचे लाया. व्हाई एम आई फोर्स्ड टू डू दिस? ये मैं कह सकता हूं घर में पढ़ लीजिए. तो किसी लोग में आप कर चुके. उसके बाद सो मेनी पीपल आर सेइंग सर रिवर और विंड लेकर आई. दैट इज नॉट मास वेस्टिंग, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. अच्छा, तो कैसे होती है? टाइप्स ऑफ मास वेस्टिंग, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट्स. तो मुझे लगता है कि जो रॉक है ना, रॉक का डायरेक्शन क्या है? How does the direction of movement look like? तो vertical हो सकता है. Can it fall vertically down? Have you visited certain areas in hill stations where they say the road is there dangerous, falling rocks expected? होता है. तो उसको बोलते हैं rock fall. क्या है? Sometimes the block is there and it just shifts sidewards. Possible because यहाँ पर थोड़ा slope था तो साइड में slope कर रहा है. Do we get that? सुमित बोल रहा है नुब्रा वैली. सुमित, वैली होगा, कोई भी वैली होगा, माउंटेन, नॉट द होल ऑफ नुब्रा वैली. समवेयर देयर विल बी स्टीप स्लोप्स, समवेयर देयर विल बी जेंटल स्लोप्स.
है ना, ऐसा कहना पूरा नुब्रा वैली, फिर भी मैं बता देता हूँ. एवरीवन, हैव यू एवर कम अक्रॉस, यू नो, लाइक gone to hill station and you see, ऐसा नहीं कि you have to go to Himalayas to see that. यहाँ दिल्ली से राजस्थान चले जाओ, अरावली पे भी मिल जाएगा. यहाँ आपकी सड़क, divided of the road. And have you seen this thing? ऐसा माउंटेन्स देखें, ऊपर का पार्ट ऑलमोस्ट वर्टिकल, ऐसा वॉल दिखाई दे रहा होता है. द अपर पार्ट इज द वॉल, और नीचे क्या हो रहा है? सेडिमेंट्स हैव डिपॉजिटेड. सम ऑफ द स्लोप्स आर एकदम मिट्टी दिख रही होती है, और कुछ पर आपको बहुत सारे फॉरेस्ट भी होता है. सम ऑफ देम आर क्लैड विद फॉरेस्ट. हैव यू सीन सच थिंग्स, और एम आई जोकिंग? राजस्थान की तरफ जाओ, ऐसे में किले बनते हैं. यस, फोर्ट बना हुआ आपने देखा, फोर्ट के चारों तरफ इस तरह का वो जो भी कहता है. इफ समथिंग ब्रेक्स हियर, what kind of mass movement will happen? Vertical. Do you get that? Why? Because this is the cliff face, cliff or vertical face, and this is the slanting one. Can you see ये slanting है? किसने बनाया? Debris face. Is everyone okay? यहाँ पे सड़क है, सड़क पर कार चल रही है, कार में तुम हो, तुम देख रहे हो. अभी किसी ने कहा नुब्रा वैली. No, not नुब्रा. But sometimes it so happens that next to the road itself, next to the roads in hilly areas, you would have come across कि next to the road itself there is this mountain. True. So यहाँ पर जब आता है तो यहाँ पर can a stone fall, ऐसा भी देखा आपने, stone fall हो जाता है, rock fall. Do we understand? So entire Nubra Valley? No, not entire Nubra Valley, but some places where they will put a warning also that rock falls will happen. And remember, कोई wind, water नहीं लेकर आ रहा है. Over a period of time, week होते होते one day it will fall. Is everyone with me? Do we understand what is a rock fall? ठीक है. But there can be sideward movement also, lateral movement, and that will be called as block slide. चलेगा? And जब आपने देखा यहाँ पर धीरे धीरे इधर आप पाएंगे कि इधर ऐसे बहुत सारी मिट्टी का ढेर नीचे भी होता है कई बार. Can the mud come on here also sometimes? True. So यहाँ पर भी mud नीचे आ रही है, but this is not like rock fall. What is this? ये slow motion होता है. This is a much slow motion. The words that you are using is slide. Very good. So it can be, can I call this as diagonal? So you people are saying rock slide, debris slide. Sometimes if you read GC Leong बताता है, GC Leong says कि electrical poles, if they were there, अगर यहाँ पे electricity supply के लिए पोल लगाए थे, wire, yes, so they also tilt. आपने देखा poles tilt, trees can also tilt. The whole thing causes them to tilt. And why is it happening? Because slowly the entire soil is moving downward. Soil creep. Is everyone okay with this? Direction of movement. And have you heard these words? Can I expect dictionary work? पहला तो mass movement समझ लेना है. ऊपर जो हुआ वहां से नीचे आ रहा है. ऊपर हो रहा है, नीचे आ रहा है, under the weight of their own sediments, and because you are at an altitude under gravity, you are coming down. Is everyone okay? The slope will decide how you would come down. Whether you are falling vertically, fall. Otherwise, flow, very very slow, creep, possible. उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक और क्लासिफिकेशन देता हूँ. Rate of flow, rate of fall. ठीक है. So it can be rapid. Rapid में क्या होने वाला है? Fall हो जाएगा, rock fall. Yes, landslide. किधर? Landslide किस में आ जाएगा? Moderate में. Moderate speed and slow speed में क्या आएगा? Creep. Moderate में एक और आता है, flow. Fall, slide, flow, creep. Fall, slide, flow, creep. Mud flow, soil creep, solifluction. Is everyone with me on this? Again saying short note आ जाएगा, mass movement पे आ जाएगा, mass movement types पे आ जाएगा, with diagrams. Can we do that? So that is why this is your dictionary plus diagram homework. My job, remember, क्या काम करना है मेरा? Explanation. Because if you go to make simple, it won't be that simple. Have I situated it there? Have I bring the distinction between normal erosion and mass wasting? Mass wasting is downward under gravity. अच्छा, ये तो बात ही नहीं की हमने सर. एक और फैक्टर भी तो हो सकता है. One more factor is possible, no? Sir, if water was there, everyone, if water was there, will it aid or not? अच्छा, एक और बात बताओ मुझे, vegetal cover, will it cause different results or not?
vegetal cover, if it is there, it will cause different results. So that is what we are talking about. Is everyone okay? So अगर मुझसे पूछे, so I would like to add more factors controlling mass movement. तो नॉर्मल फैक्टर्स तो आप एकदम से बोलोगे सर, इट डिपेंड्स ऑन वाटर, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी तो सेम है सर, इट डिपेंड्स ऑन हाइट, हाइट भी ठीक है सर, इट डिपेंड्स ऑन स्लोप, दीज आर द फैक्टर्स. अब मैं इसमें थोड़ा टेक्निकल नाम डालना चाह रहा हूँ. इट डिपेंड्स ऑन इट फैक्टर्स, द फैक्टर्स आर टू फैक्टर्स एंड देयर रेशियो. ये क्या है सर? टू फैक्टर्स. नंबर वन, फर्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल. And second is the shearing force. इसको हम बोलेंगे shearing resistance. Okay, take a thin magazine and tear it apart. Possible? True. Take a thick book, tearing it apart, difficult. Take a 10 rupee note, tear it apart. Instead of that, take a stack of 10 रुपए की गड्डी लो, उसको फाड़ने की कोशिश करो. मुश्किल है कि नहीं? True. So can I say that your shearing force, how strong you are tearing it, that, and how strong it can resist, that is that. Shearing force is because of the gravity. Gravity is causing, see, you are attached to a hill and it wants to shear apart. Shear matlab tangentially it wants you to be pulled down. So the force is there. So shearing force and the resistance to the material will decide whether mass movement will happen or not. Is everyone okay? And if you are close to a hill, and a highway is to be made, will these two factors be kept in mind or not? Yes or no? So I have a formula. Factor of safety is equal to shearing resistance of material. Get that? And divided by magnitude of shearing force. Fs is equal to shearing resistance divided by magnitude of shearing force. अब जल्दी से बताओ मुझे, you are making a road and you don't want mass movements उसके आसपास. So what would you want to keep Fs? Above 1 or below 1? Above 1 or below 1? Above 1. ताकि आपका shearing resistance ज्यादा है, you are able to resist. Fs less than 1 implies mass movement will happen. True or not? Because shearing force is high. Is everyone okay? तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दे दिया. अगर आप आंसर लिख रहे हो and you write this, does it add a dimension to your answer or not? Yes or no? So अब हम ये कह रहे हैं कि what is it? Now we are trying to find out what are the things. Now we have understood what is mass movement. Now we are looking at क्या चीजें हैं जो उसको aid कर सकती हैं, which can slow it down, which can increase it. How can we make our decision? And two things have come: shearing resistance of the material. Can I say ये structure? Is the structure? What kind of a rock is it? How friable? How is the state of degrees? बड़ा छोटा क्या है? वो सारी चीज उसमें आ गया. And then we have the magnitude of the shearing force. चलिए एक इंटरेस्टिंग टेबल बताता हूँ आपको. This is the three types. ये वाले तो हमने डिस्कस. Is everyone okay with vertical, lateral, diagonal? Rapid, moderate और slow के लिए I want to give you a table. चलिए बनाते हैं. So let us make a table with 3 rows and 3 columns. 3 by 3. एक टेबल बना रहे हैं. ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वाटर. रिमेंबर वाटर एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट एंड दिस इज स्पीड ऑफ मूवमेंट. ठीक है, सो 3 by 3 को कर रहे हैं. So first is very little water, very less water is used. Get that? Now water only for lubrication. Little water. Can I say little water? Little water, but not very less. And this is sufficient water. Can you see water? I'm just trying to show that अगर पानी बढ़ जाए तो क्या होगा? If the water is increased. ठीक है?
rapid, moderate, slow. Where do you think will be slow movement? In which case? In which case will be very slow movement? So where water is very less. Just keeping the water in mind, yes? So where water is very less. So what will it be? Can I say rock, creep? Yes. Soil, creep. And there is a term called solifluction. Is everyone okay? Very less. Will it promote rapid? No. Very less. Will it promote moderate? No. Very less से यही होगा. But if there is sufficient water to lubricate, only lubrication. So rapid तो नहीं होगा, but moderate will be facilitated. And what will happen in moderate? Earth flow, mud flow. Do we get that? Mud flow. And sometimes the sheet wash can also happen, but I'll keep it here only. Creep हो जाएगा, ये हो सकता है, but I would say slow की जगह तो यहाँ पर तो sheet wash ही होने वाला है. If there is a earth flow and mud flow will be there, and if at all we are looking at this, तो sheet धीरे धीरे wash हो जाएगी. Is everyone okay? Rapid will happen when there is sufficient water. When there is sufficient water, that is the time we will have the rapid movement. इधर क्या हो जाएगा? Landslide. अब बताइए मुझे, when there is heavy rainfall in Uttarakhand, in Meghalaya, in Western Ghat, in Himalayan slope, landslide होता है कि नहीं? Monsoon में, yes. Rock fall, सड़क बंद हो जाएगी, वहां पर बहुत सारे पत्थर गिरे हुए, yes no? Debris fall. True. I think यहाँ पे खूब अच्छा debris slide होता है. Does it happen or not? Very strong debris slide happens. Entire sheet wash यहाँ पर भी हो रहा होता है, sheet wash भी हो जाता है. Slow पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बाकी सब चीजें फास्ट होती है. Is everyone okay? Can be related to water also. Can be related to water also. Okay. And if you are looking at other factors, well, other factors can be, can I say other factors? Loading of slope. चलिए कैसे होगा? Heavy snow. Possible? If snow is getting deposited, is the slope getting loaded or not, everyone? Possible? What about building material? You are taking so much of infrastructure to Uttarakhand. Are you loading the slopes or not? Are you loading the slopes? Can I say anthropogenic? You are blasting the mountains. Vibrations. जब सड़क बना रहे होते हैं, vibrate करते हैं ना. You see, they are using those machines to drill and vibrate in those areas. True. You alter the water levels, alter the water table, and remember, water table decides what? The lubrication. Yes, deforestation. Sometimes what happens is top is not loaded, but the bottom is removed. Removal of underlying support. Say for example, undercutting by the rivers. Imagine there is a mountain which is like this. Why? A river is flowing underneath. So can this part fall anytime? True or not? Get सकता है? This part. So undercutting by rivers, and what will happen? Can be there. Huge problem can be created over here. नीचे rocks ऐसे हैं, soluble rocks. Undercutting by river or soluble rocks at the bottom. उस वजह से हो सकता है. ठीक है? कुछ endogenetic factors हो सकते हैं. Endogenetic factors like earthquake, volcano. Possible? Can I say chemical changes in the structure of the rocks? Chemical changes in structure. Remember hydration, oxidation. वो rock को ही weak कर देता है. Remember the resistance of the rock is reduced. Resistance of the rock is reduced. Everyone with me? Possible? ये मैंने क्या किया? This is called classification notes. What is this? Analysis notes. I analyzed also. No? Everyone, do you have concept clarity about mass movement now? Get that? FALL, fall K types. Please make sure you get that. On steep slopes, under gravity, और इसमें पूरा टुकड़ा जो है नीचे जाएगा. Individual block will go. ठीक है? उसके बाद we have fall के बाद slide. Generally, I would say shear surface पर the sediments will slide. उसके बाद क्या है? Slump. चलिए slump और slide क्या होता है?
सिंपल वर्ड बता रहा हूँ, एक फ्रेज से एकदम क्लियर हो जाएगा। इंटरमिटेंट स्लाइड। स्लाइड है, आप ऐसे जा रहे हो उसको, इसमें क्या ठक स्टॉप, ठक देन स्टॉप, देन मूव एंड देन स्टॉप। इज एवरीवन ओके विद स्लम्प? और जनरली क्या होता है, इसमें रोटेशन भी होता है। इट कैन आल्सो बी, इट रोटेट्स इतना इतना इतना, यू नो, लाइक इट इज रोटेटिंग इन टर्न्स, सो इंटरमीडिएट दिस थिंग इज देयर, और ये रोटेशनल भी होता है, ठीक है, छोटे डिस्टेंस के लिए हो सकता है, दैट्स देयर। एंड देन व्हाट डू वी हैव? फ्लो, एंड इन द एंड व्हाट डू वी हैव? क्रीप। एवरीवन कैन एक्सपेक्ट यू टू नो दीज वर्ड्स, दीज टेबल्स, एंड सबके डायग्राम होने चाहिए, ठीक है। सॉइल क्रीप, रॉक क्रीप, और खासकर ये जो वर्ड है सोली फ्लक्शन। And I also want to tell you, creep is so slow that it can't be observed. वो दिखता नहीं, it is so slow. तो फिर दिखता कैसे? Remember, things turn, the pole will turn, and other things will turn. That is there, which is happening. So the types, the role of water, and the factors all coming on a single page. Can I say that the basic part, the basic concept which I wanted to do today, half an hour में हमने ये कर लिया है. What is left now? The diagrams. कर लेंगे. और क्या करना है? मार्क्स के लिए किसी ने कहा नुब्रा वैली, बिल्कुल सही कह रहे हो, एग्जांपल्स बुक में होंगे, एग्जांपल कर लीजिएगा। उत्तराखंड में फ्लड में हमने बहुत सी जगह पर देखा। ट्रू एवरीवन? नाउ एवरीवन फ्रेश पेज प्लीज, क्विकली फ्रेश पेज, फ्रेश पेज। मास मूवमेंट, एवरीवन फ्रेश पेज, मास मूवमेंट, 1 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग, नोबडी टू बी लेजी। अब तो पढ़ा दिया है, अब अच्छी आनी चाहिए। एंड रिमेंबर, यू डोंट राइट सेंटेंसेस इन ब्रेनस्टॉर्मिंग, जस्ट स्मॉल लिटिल फ्रेजेस। quickly everyone, quickly, 1 minute time starts. Okay, stop everyone. Quickly, so how was the brainstorming? Any better? How was the brainstorming? Any better? ये जल्दी से बताओ, बिफोर एंड आफ्टर कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पहली ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसी थी और अभी क्या है? टेल मी व्हाट इज बेटर। सो मेगा निका सर एबल टू राइट इन सीक्वेंस। सो मेगा, दिस इज अ ब्लंडर, यू नेवर ब्रेनस्टॉर्म इन सीक्वेंस, इट इज रैंडम। क्या बात कर रहे हो यार, इतना बताने के बाद सीक्वेंस समझ में आया। मोर डायमेंशंस, ओके, सो रिचनेस, नहीं हाँ, बेटर वोकैबुलरी, आई डोंट नो बेटर वोकैबुलरी, बट हाँ ठीक है, आपके पास एक रिचनेस ऑफ वर्ड्स भी हो गया, टर्म्स भी हो गया, आइडियाज भी थे। प्रियंका कह रहे हैं पॉइंट्स दिमाग में आ रहे थे। पॉइंट्स तो हमेशा दिमाग में है यार, पॉइंट्स तो हमेशा ही दिमाग में। सर 4x टाइम्स कंटेंट, अच्छा तो गोबर बढ़ गया है। राजेश सेइंग 4x टाइप ऑफ कंटेंट, गोबर बढ़ा, कंटेंट बढ़ गया सर। इतनी खुशी हो जाती है ना कि सर अब मैं एकदम टू मच ऑफ गोबर, सम मोर मटेरियल एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा ठीक है, मुझे तो एक ही चीज समझ में आता है कि आपका रिकॉल फंक्शन काम कर रहा है, दिमाग में रिकॉल का जो बटन है दैट इज वर्किंग। अगेन देयर माइट बी सम पीपल हु माइट बी हियर फॉर नोट्स। देखिए मैं बहुत क्लियर हूं, आवर ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हैज टॉट अस दैट द टीचर विल कीप ऑन डिक्टेटिंग। आप कहीं किसी यूनिवर्सिटी से आए हो, जेएनयू का मास्टर्स कोई छोटी चीज नहीं है ज्योग्राफी में, तो हमने वहां भी देखा कि सिर्फ डिक्टेटिंग ही हो रहा था। और बहुत से लोग यहाँ पर इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होंगे। दिस इज द टाइम व्हेन यू टेक अ ब्रेक, व्हेन आई आस्क यू फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू टेक अ ब्रेक। सो दैट्स द बिगेस्ट ब्लंडर, बिकॉज आप वही पुराने तरीके से करने वाले, ओल्ड मेथड्स की ओल्ड रिजल्ट्स। अगर आप चेंज करना चाहते इन द रियल एग्जामिनेशन, दिस क्विक रिकॉल, क्विक एंड वाइड रिकॉल इज नीडेड। अभी क्या है, मैंने सब डाल दिया, आप उसी को वॉमिट कर रहे हो। अगर मैं भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करूं, मैं बिल्कुल वो नहीं निकालूंगा जो सिर्फ क्लास में पढ़ाया गया। देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग। नोबडी रोट सर व्हाट यू टॉट, वो तो था ही था सर, मेरी तरफ से और भी बहुत सी चीजें आ गई। दैट इज व्हाट richness of idea generation is। बहुत से लोग मेरे पास आते सर ऐसे में सर कुछ बता दीजिए। रिमेंबर समबडी आस्क्ड मी सर इंटरव्यू वाले सर क्वेश्चंस के आंसर्स बता दीजिए। दैट्स ideational, I would say constipation। So we have ideas about types and factors influencing। अरे भाई मैं तो उसमें सारी चीज कहूंगा, मैं तो मास वेस्टिंग की बात में कहूंगा। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर मेरे लिए है ना, तो मास वेस्टिंग को मैं विजुअलाइज करना शुरू करूंगा। आई विल बी लुकिंग एट मास वेस्टिंग वेस्टर्न घाट। हाउ मेनी ऑफ यू रिटन दैट? मास वेस्टिंग वेस्टर्न घाट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन दैट, यू नो, लाइक
स्लोप एंगल, स्लोप एंगल, बहुत सारी चीजें उसमें आनी चाहिए कि भाई स्लोप एंगल एक और चीज, वो सारी चीजें मैं बता नहीं रहा हूँ, अदरवाइज एंगल ऑफ रिपोज भी एक चीज होती है, मेनी मेनी थिंग्स विल हैपन। सो आई वुड वांट, जितना रिच सोचेंगे उतना अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि मैं सबसे शाना हूँ, पहले ये मास्टर नोट्स देगा, मैं लिख रहा हूँ, मैंने और 4 मास्टर से पढ़ा हुआ है, आपने गोबर इकट्ठा किया है, आप और करने आ गए। इफ यू डोंट लाइक दिस, well, that's the reality, and I would not move away from saying that, like you are another PDF hunter who has come over here. So we are looking at you being able to generate, यहाँ से इस स्टेज से निकल जाना है। मेरे कोर्सेज में, माय कोर्सेज आर aimed at pushing the student gradually, step by step, that anything that comes वो एकदम brainstorming कर सकता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन ये थोड़ी आएगा व्हाट इज मास मूवमेंट, व्हाट आर इट्स टाइप्स। द geomorphic terrain is decisively modified by mass movements in highlands across the world. Elucidate. This is the test. This is what we are going to face. And you, from your schools, your colleges, your universities, your coachings, your PDFs are mugging up this. अपने जैसे होता है, फॉल भी आता है, स्लाइड भी आता है, स्लम्प भी आता है। क्वेश्चन तो चाचा ये आएगा, the geomorphic terrain is decisively modified by mass movements in highlands across the world. अब ये बता दूं, let me tell you one very clear thing. This is not the answer. Do we get that? But yes, many things from this can be used in the answer. Do you understand why coaching walas are dictating answers? Because they feel इसका आंसर बताऊंगा तो the student will be impressed that sir knows geography. I'm saying if I make you do this brainstorming, I'm giving you the key to write these answers. Because a teacher can give you 100 answers, 200 answers, 1000 answers. First of all, how will you mug them up? And tell me, if you have 1000 answers, can UPSC not create 19 extra questions जिन पे आपको आंसर लिखना unheard of? फिर क्या करोगे? Why 19? 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 2 कंपलसरी होते हैं जिनमें 5 होते हैं, प्लस 3 वाले 9, टोटल 19 आंसर लिखने होते हैं उस दिन। If you have mugged up 1000 answers, which many of you think yes बन जाऊंगा इसी से, in your arrogance and overconfidence, can that day UPSC not puncture your arrogance with this question which I have never thought of? अभी brainstorm करके आपके सामने क्वेश्चन बनाया, I have never thought of the answer also for this. अभी बनाया, geomorphic terrain is decisively modified by mass movements in highlands across the world. Elucidate. अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, आंसर बनेगा, पूरा फ्रीडम है मेरे पास. How did I create this question? That's brainstorming, no? So questions are coming from brainstorming and students are operating from notes. जलियांवाला बाग होगा या नहीं होगा? It's like Britishers coming with guns and we with our swords and sticks. आओ गोरों तुम्हें मारेंगे, टीपू सुल्तान की तलवार और तांतिया टोपे और रानी झांसी का घोड़ा, हम घोड़े पे रह गए यार. True or not? तो आप एग्जाम में जाके, अरे मेरे मास्टर जी के नोट्स ये तो मैंने मंदिर के पास रखे हुए हैं, इन्हीं से जो है मोक्ष मिलता है, भगवान ने मुझे इस जन्म में अमर कर दिया, मास्टर जी से मिलवा दिया, और एग्जाम देते हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं. मास्टर जी का कोई कमी नहीं है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मास्टर जी इज डूइंग टू मच, बट आई एम नॉट पासिंग. होगा कि नहीं? एब्सोल्यूट जलियांवाला बाग. अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज बंदूक लेके खड़ा है, उसको छोड़ने का कोई इरादा नहीं है. ब्रिटिशर्स वर नॉन मॉरलिस्टिक ऑन दिस, सबको मारेगा वो. ट्रू और नॉट? एक को मैंने लिखा, like somebody was from some coaching and he was writing the same answer. I said, वफादारी का क्या मिलेगा भाई? I know a pet animal dog is known for its loyalty. Why you being loyal to notes? Did you read the question? Question क्या पूछ रहा हूँ भाई? Loyalty मतलब what has happened? What bone did you start eating? कौन सा loyalty लेकर घूम रहा है? Sir, I am a loyal student, sir. Sir, I don't have a tail, but I can wag my tongue. क्यों? आंसर लिख दे. And you will be surprised. You will be surprised. ये जो क्वेश्चन है ना, अभी बनाया मैंने, अभी बनाया, इसका आंसर ये लिखेगा. फिनिश. You ask any question on mass movement, answer is fixed. यही मार के आना. And the teacher also said with 56 इंच का सीना, मेरे नोट से पास होते कोई कुछ भी बोले लिख के आ जाइए, क्योंकि ये गलत नहीं. Obviously this is not wrong, but this was not asked. This was not asked. Yes or no? So what's your name? I belong to the royal family of Jaipur. अबे what's your name? I belong to the royal family of Jaipur. अच्छा, what's your father's name? I belong to this. क्या हो गया? What has happened? True? So let me tell you how irritating it can be. So 8th of April, I need to renew my insurance. Everyone, please get this. 8th of April, I need to renew my insurance. This is a term plan. This is a life insurance. In India, people don't take term plan. People don't take life insurance because ऐसे कोई मर थोड़ी जाएगा. So every year, I give 16,000 rupees. So if I survive
till 60 years, if I survive till 60 years, all money gone. But if I die before 60 years, then my family will get 1 crore rupees. I'm sure my family doesn't want this 1 crore rupees. Yes. So I'm doing this. For how long? I think it's been long. I've been doing this insurance for last probably maybe 20 साल से insured हुआ. So when I was 25, then I thought that if I die before 60, that's that. But if I survive, all the money is gone. All the money is gone. So बेवकूफी आप इतना पैसे क्यों डाल रहे हो? हर साल 16,000 रुपए डाल देते हो आप. True. Well, in India, people don't go for this. People actually go for insurance. जिसमें कुछ उनका पैसा वापस भी मिलता है. You know, there are many plans you can get some money back and everything. This is a pure term plan. This has got no investment in this. ये पैसा सब जाएगा, and I want this money to go. I don't want to hold it. So I'm doing this. My belief. Because when I was sailing across the oceans, that was a profession which has its hazards. So in my 20s, I could have died. So I thought, my parents and family, if I die, so that's that. Job done. Am I okay with this? Now, I got a call today morning. Today is 2nd April. So that fellow says, sir, I'm calling from the insurance. I said, yeah, thank you for the call. I know the insurance is due. I will pay it. Because I was working, I was reading. He said, no, sir, I have an important information about your insurance. I want insurance. I have taken this insurance. I want to renew it also. Nobody has to tell me, but he's telling me, and now he's saying, I have some important information to share. I said, yes, please tell me. So he says, sir, your policy number is this. Your policy was started on this date. Your policy expired on this date. This person is your nominee, sir. And this is the amount of premium you have to pay. I said, sir, hello, whosoever you are, you have called. I want to tell you that I will pay it. Don't worry. You said some additional information. This is no information. Remember, this is already ready-made. I said, for work, why are you telling me this? Don't worry, when I renew, I will get this. No, so please don't tell me. So I told him. So now what he says? तो आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करने के लिए कौन सा माध्यम यूज करना चाहेंगे? क्रेडिट कार्ड देंगे या फिर कैश में देंगे? Imagine, and this is not a machine talking, this is a gentleman talking, and this is not a scam. Priyank is saying scam. Priyank कोई scam नहीं. ये वही कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको बोला कि यही जाके बोलना. तो फिर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूं, तो मेरे पास एक दो शब्द हैं जो मैंने उनको दिए. बात में रहने का, चलिए अब समय हो गया, मैं इंश्योरेंस कर लूंगा, रख दीजिए. Let me get that. This is what is happening in answer writing. You're not bothered about the question. You're not bothered about the question. You're bothered about, भाई ये टेबल किसी तरह बनाना है. There are so many students who are wondering after the result of the mains, पेपर तो अच्छे हुए थे यार, मार्क्स नहीं आए, कुछ गड़बड़ हो गई. मैं तो सब लिख कर आया था. अभी सब थोड़ी लिखना था. क्या लिखना था? लिखना क्या था? You are a customer care guy. You are following up. Will the client pay that or not? And the client is saying in the very first line, don't worry, I'll pay it. Maybe today or tomorrow. Don't worry. ठीक है? यही मैंने उसको बोला. He should be happy. Thank you sir. Just wanted a reminder. And just in case if you need any other help, sir, अगर कोई technical कोई problem हो तो please feel free हमें contact कर लेना. And thank you to know that you are enjoying the product. यही बोलना था. कुछ मतलब नहीं उसको, मशीन है. तो मैंने कहा बड़े दिन से यार किसी को कुछ अपशब्द का प्रयोग नहीं किया. तो फिर मैंने, कोई बार होता है ना वोकैबुलरी कम होने लगती है. So I kept my vocabulary. In my 20s I used to speak German also. But when you don't use the language, that language dies. So that guy gave me an opportunity to keep my Paschim Uttar Pradesh alive. So I kept it alive. I am very fond of all my cultural value systems. Yes, my religion, my caste, my community. वैसे caste आता है. पंजाबी में इतना caste का खेल नहीं. But whatever we are talking about, Paschim Uttar Pradesh I used. So you should also be very proud. And trust me, the examiner is also very proud. आप answer वैसा दीजिए. Now the examiner cannot use his Paschim Uttar Pradesh word in the comment. Yes or no? So he will use this as a tool. He cannot write those words, no? ये आ जाएगा, दो आ जाएगा. A student came to me. He said, "Sir, आपने ये बनाया मेरे आंसर में. What does it mean?" I said, बोल नहीं पा रहा था जो बोलना था, इसलिए बना दिया. I wanted to say something. Didn't have the liberty as a teacher, I have to maintain the dignity of a teacher. सबके सामने मैंने बता दिया था कि भाई ये मेरा कोड है. अगर आपको स्माइली मिला है, मैं काफी खुश था. I renewed my vocabulary, but आपको नहीं लिखी. I hope जोक सपाट आप एग्जामिनर को इतना फ्रस्ट्रेट नहीं करेंगे. You will respect the question. Whatever is the question, you will answer that. And whatever I am giving you is the raw material to answer. Is everyone okay? इसीलिए कहता हूँ आंसर लिखो. इसीलिए कहता हूँ अपने नोट्स बनाओ. So that if there is some error, your teacher is your friend ना. I am on your side, no. और मैं करूँगा क्या ज्यादा ज्यादा स्माइली बनाऊंगा. तुमको क्या पता मेरे स्माइली का मतलब क्या है? Okay. So और क्या कर रहे थे हम? हाँ जी. Landscape development and slope evolution. Next topic जल्दी से लिखो. लैंडस्केप डेवलपमेंट एंड स्लोप इवोल्यूशन. कल मैंने किसी को बोला कि हाँ ठीक है तुमने आंसर लिखा होगा, मेरे आंसर छाप दिए होंगे, मेरे नोट्स छाप दिए होंगे. तो द पर्सन सेड सर आई नेवर copy paste. I'm not saying about copy paste. I'm just saying that do not be in that mode that whatever the teacher says that is the answer. Answer will be somewhere used from the teacher's content. That is what I'm saying. तो लैंडस्केप को डेवलप करना है, कर दे. तो पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. व्हाट इज लैंडस्केप? लैंड फॉर्म
individual form taken by land, so mountain, plateau, plain, subway, landform. Can I say landscape is an assemblage of that? True. So you are in a train and you look outside the window. दूर आपके ट्रेन के ट्रैक से दूर. Sometimes do you see this or not? True. Some station, like some buildings might be there. कहीं पर forest हो सकता है. Maybe some water flowing. So ये क्या है जो आपको दिख रहा है? This is landscape. Is everyone okay? Landscape development, can I say landscape development happens over a period of time? I want to explain that. So can I break it down to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 units and explain that? Can I say the broad landscape can be broken down? Broken down into what? Broken down into what? Landforms. Very good, Megha. That's so good. Yeah, you people are understanding. So can I say landscape development is a macro thing and it is the study of how landforms were created. अच्छा, can landforms be of huge diverse types? बहुत सारे types के हो सकते हैं. अभी मैंने लिख दिए 9, 10. 10 is a river itself. River valley is a landform. ठीक है. तो अब इनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है तो क्या करूं? अब मैं एक नया वर्ड यूज करना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ. The word is called slope. Landscape development is nothing but slope evolution. I'm a connection कर रहा हूं. I'm trying to connect these words. Landform you understood, landscape you understood. Now I'm saying landscape to develop is nothing but slope evolution. Though if you ask me, abhi tak your understanding tells you landscape development means landform evolution, but I am replacing the word landform with slope. Why am I doing that? Why am I doing that? Because landforms are nothing. All landforms are collection of slopes. It's like I want to study molecules. I want to study molecular development. So you say, no, sir, molecular development, you should study atomic evolution. And then I say, no, why atom? Why not electrons, protons, neutrons? True or not? So landscape is made up of landforms, and landforms are nothing but a collection of slopes. Now the question is, it's a new idea, and I said, as jo main baatein karunga, there will be a lot of theoretical ideas, so they must settle down in your mind. So everyone, this is a landform. Do you agree? Do you agree? I can break it into slopes. Slope 1, slope 2, slope 3, slope 4, slope 5, slope 6, slope 7. Can you see this is a slope? Slope 8, slope 9, slope 10, slope 11, slope 12, slope 13, slope 14, slope 15. This is a convex slope. This looks like a rectilinear straight slope. This looks like a concave slope. True or not? Suddenly, the idea of landform is lost. A plateau is there. What is a plateau? Slope. Slope, 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 slope. Do we get that? That is a slope. So this slope क्या होता है? भाई देखिए ये horizontal है. Yes. So you are like this. You are like this. You are like this. Gentle, medium, steep. Can I say slope is the angle? Slope is nothing but the gradient. Is everyone okay? Horizontal, slope, slope. Convex slope, concave slope. So landform study of landforms is nothing but study of slopes because they are a combination of slopes. If I want to study human beings, can I say it is a study of cells? Yes. So landforms are study of slopes. Now, if I study an Indian and an African, yes, an Indian and African, so you might be biased. You might be biased because an African is in a different situation, an Indian is in a different situation. So your study will be biased. But if I give you just a sample, a biological specimen of skin sample, you don't even know whether that person's skin is from Africa or India. Then you will treat it as a skin sample. Yes or no? So I'm saying that landforms have their diversity, but if they can be reduced to slopes, landscape development is nothing but the study of slope evolution. How slopes are what they are. एक बात बताइए everyone, please tell me. अभी आपने कुछ पढ़ा मुझसे? Yes. Rock fall. तो अभी कैसा हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद? इधर का तो रॉक चला गया ना? This rock has gone. After some time, what will happen? This one will also fall.
then how would the landform look like? Will it look like this? Now this one is steep, ठीक है, this one is steep, यहाँ gentle है, तो कुछ यहाँ भी fall करेगा, वो इधर हो जाएगा, and it will get collected over here. So can I say eventually I will get this sort of a landform? So what started as a straight line has now transformed into this. Has the landform changed? Yes. But what has happened actually? Slope has changed. Slope evolution. If I know how slopes change, job done. Do I understand geomorphology? If I get to the understanding of the movement of electrons in an atom, can I understand current? Current is a macro thing. समझ में आ गया? तो क्यों slope evolution is a part of our syllabus? That is a theoretical understanding. और हर किसी ने अपनी understanding की. Okay, so the understanding of solar system, पहली बार किसी ने बताया तो नहीं हुआ ना? There are so many theories of origin of solar system. Remember that? Planetesimal theory मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको binary theories बताया, then the Big Bang idea came, the nebula theory and all that. So can I say there will be many people who will have different ideas on this also? Is everyone okay? So do you know why there are different theories in our syllabus? Theories of landform evolution. पहला तो ये समझो कि landform, landscape is made up of landforms and landforms are made up of slopes, and these slopes change. Why do these slopes change? One of the things which I just told you is mass wasting. Mass movement can lead to creation of slope change. Can I say mass movement is nothing but exogenetic? Similarly, a volcano can lead to slope change. Something which was flat, रात को it bends. It bends. So a new slope has been created. So endogenetic भी हो सकता है. So can I say tectonic forces, exogenetic forces? And in my foundation or in my easy classes, have I already done that or not? तो ये आपको समझ में आना चाहिए. तो दो तरीके हैं everyone. One is we can see slope as this angle. Slope can be this angle, or slope can also be, slope itself can also be study of variation of surface of Earth. Because remember, geographer is nothing but a person who describes the Earth's surface. So Earth's surface is nothing but uneven slopes, steep slopes, gentle slopes, concave slopes, convex slopes. Possible or not? Possible. तो अब हम slope समझ गए. Now we have understood the connection between the word landscape, landform, and slope. Let us go into types of slopes. चलेगा? तो ये है on the basis of their origin. On basis of their origin. इसको क्या कहा जाएगा? Genetic classification. I am classifying slopes and I am classifying them on the basis of their origin. Genetic classification. कैसे वो बने? So let me give you two. अभी मैंने आपको example दे दिए. Now you already understand that. One is this and bracket. Get that? Two is this and bracket. It's something to be put in bracket. So number one is endogenetic slopes. Exogenetic slopes. Is everyone okay? Simple to understand. अभी example दे दिया था. Endogenetic slopes कौन बनाएगा? Which processes? Result of what? Tectonic. So can I say upliftment? Can I say folding? Can I say faulting? Can I say up warping? Can I say down warping? say up warp और down warp क्या होता है? जब सीधा है वो थोड़ा सा ऊपर को bend हो गया. Doming is up warping and depression is down warping. Possible? So words हैं. Remember I'm playing with the vocabulary today so that you can. So upliftment of land, subsidence भी हो सकता है. Subsidence हो सकता है. Tecto volcanic, earthquake and volcanic. Everyone okay? चलिए अब आते हैं एक्सोजेनेटिक. एक्सोजेनेटिक में कहते हैं एक्सोजेनेटिक में क्या है? एग्रेडेशनल स्लोप या पहले डिग्रेडेशनल कहते हैं. डिग्रेडेशनल स्लोप. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ वेदरिंग, रिमूवल ऑफ मटेरियल. कौन रिमूवल करता है? वेदरिंग करता है, मास वेस्टिंग करता है. इज एवरीवन ओके? डिग्रेडेशन. दूसरा क्या हो सकता है? एग्रेडेशनल. एग्रेडेशनल क्या करेगा? इरोजन, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनली डिपोजिशन. ट्रू. यहां तक ठीक है? कॉमन सेंस और नॉट? वट एवर इज द कॉमन सेंस. I did not understand degradational and degradational. Perfectly okay. I am with you on this. मैं बता देता हूँ.
Now what happened is because of the gravity this part टूट गया, टूटकर नीचे आ गया and got deposited. Is everyone okay? So now how does the top look? Will the top look like this? अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? So if you ask me, originally the dotted line was the slope, but now this has become, can I call this slope, what is this slope? 90-degree angle. This slope as a degradational slope. Originally 90 नहीं था, originally 90 से कम था. And this one which was steep now has become gentle. Can I call this angle as a gradational slope? तो क्लैरिटी भी रहना चाहिए, ठीक है. एंड इज दिस ऑल थ्योरेटिकल या रियल वर्ल्ड में आपने देखा है कभी ऐसा? सर रियल वर्ल्ड में तो पता नहीं, ये तो देखा है. So, ये तो मैंने देखा है. ट्रैवल्ड ऑन द रोड इन द रेलवेज आल्सो व्हेन यू आर ऑन दैट, समटाइम्स यू हैव सीन दैट इफ यू गो टू द हिल स्टेशन, ऐसा दिखता है, ऐसा मड इकट्ठा होता है, रॉक्स आल्सो फॉल. देखा कि नहीं? हाँ सर देखा तो है. फिर ठीक है, अच्छी बात है, देखो आपने देख लिया. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एवरीवन विद मी ऑन दिस. ये मैंने बनाया अभी, ब्रेनस्टॉर्मिंग. This is a brainstormed diagram. I did not think that I will make it. I wanted to convey something to all of you. So for that, for my student to understand, I had to make straight, cliff sites where rocks will fall. तो मैंने ये भी बना दिया. आप इधर खड़े हैं और आप इधर ओपन डेफिकेशन करने आए थे. आप इधर ओपन डेफिकेशन करने आए तो मोदी जी के अभिशाप से वो पत्थर आपके ऊपर आ गया. You were defecated. सर सिली एग्जाम्पल, ऐसे मुझे लगा कि मतलब रियल में you want to. You don't do open defecation. Everyone, whatever I'm telling you is real. The problem is in the universities, in the colleges, in the coachings. कई बार क्या हो जाता है? This part become very theoretical. They are not able to relate to it. Do you understand endogenetic and exogenetic slopes? वो जो mountain बना है वो तो endogenetic. बाद में they can be degradational and gradational. Is everyone okay? तो problem आती है UPSC के साथ. When UPSC plays with the vocabulary. UPSC ने बहुत मजेदार पूछ लिया एक बार हमसे. Explain the epigene cycle of erosion. और तेरी epigene क्या होता है यार? होश ही उड़ गया. एपीजीन क्या होता है? तो जो एक्सोजेनेटिक होता है ना, इसको एपीजेनेटिक भी बोलते हैं. एपी इज ऑन द सरफेस, एपीजेनेटिक. और जो अंदर होता है उसको हाइपोजेनेटिक. चलेगा? इसलिए ब्रैकेट में लिखवाया. इफ ऑन दैट डे यूपीएससी प्लेज द गेम विद अस, वोकैबुलरी तो डू क्लियरली बोला एपीजेनेटिक ये होता है. इज एवरीवन ओके विद दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड why I often tell my students that even if you don't understand much of Made Simple, make sure you go through them. ये terms ना वही use करता है. Remember वो technical terms में बात करता है वो. So that is why I value that book. That is why I do tell my students that if you just refer to the dictionary for such words, even if you have not memorized it, they somewhere in your subconscious are telling you कि वहाँ पे guess भी मारना है तो क्या मारें. कैसे? अभी पूछ लिया phreatic eruptions क्या है. UPSC short note compulsory question phreatic पूछ लिया यार. So people who cleared this boy is Indian Foreign Services. अभी कल उसका फोन आया था कि सर वीकेंड पे मिलते हैं, मैं तो यहीं पे दिल्ली में हूँ because training for foreign services in Delhi only. So when he was writing 2 years ago, तो then he said sir phreatic मैंने कहीं पे पढ़ा था, phreatic is to do with ground water. phreatic और eruption sir volcano. तो I thought geothermal heat की वजह से when ground water gets heated up and I brainstormed an answer. अच्छी बात है. That is what the examiner wants from you. So he said I did not know what to write in phreatic eruption sir, but phreatic was this and this. I connected them and I created an answer. Say for example that water will turn into steam, it will come out with pressure. Geysers are there, yes, natural springs are there, hot springs are there. So then I brainstormed India में वो तत्ता पानी कुल्लू मनाली के पास वहाँ पर है. फिर मैंने वही बोला कि लोग वहाँ पर जाते हैं hot springs में, वो अपना पैर डालते हैं, skin diseases ठीक हो जाते हैं because rich in sulfur that is there. सोच रहे हैं ना? This is called brainstorming. Why? Because the question was asked. अच्छा, the person who's the ready-made guy, moment he says phreatic eruption. Out of the 1,000 questions, sir did not teach this. Oh my God, this is out of syllabus. I have to leave. Otherwise, ऐसा पता क्या होता है? अच्छा, mass wasting. Oh, this is question number 997. छाप. 997 vomit. अबे 997 थोड़ी question तो पढ़. Okay, phreatic ही पाया नहीं सर. सर ने तो बहुत ट्राई किया. ये सब. So ये बच्चे जैसे ही वो पेपर देखते हैं ना जिसमें नया क्वेश्चन आता है जो उनके सर ने डिक्टेट नहीं किया होता, तो फिर वो गाना गाते हैं. सखी सर जी तो खूब ही पढ़ाते हैं. यूपीएससी डायन घटिया क्वेश्चन पूछे जाते हैं. They will not look at any implementation of the answer. उधर भी टीचर की तारीफ. सखी सैया नहीं सर कहना पड़ेगा, वैसे सैया बनाने को तैयार हैं. सखी सर तो खूब ही पढ़ाता, खूब जमा के पढ़ाता. यूपीएससी डायन जो है ना मारे जाते हैं. फिर बेचारे दुखी हो जाते हैं. आई एम वेरी अनलकी.
माय पेरेंट्स टोल्ड मी आई एम वेरी अनलकी, सो ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चंस कम इन माय अटेम्प्ट। अरे इस बार भी आया ना, बहुत से लोग छोड़कर आए। क्या क्वेश्चन आया? क्रायोप्लेनेशन। सर ये किसी कोचिंग में नहीं कराया जाता। अरे चाचा क्रायो बता दिया, प्लेनेशन बता दिया, स्लोप इवोल्यूशन लगा दे इस पे, क्या दिक्कत है? क्रायोप्लेनेशन, स्लोप इवोल्यूशन, पेरी ग्लेशियर लैंडफॉर्म। सर क्वेश्चन नंबर 1000 में कहीं पे कराया नहीं था सर एक्चुअली। Can't do much about them. Is everyone okay with this word? अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा डिग्रेडेशनल है ना, डिग्रेडेशनल, इसमें मेरे पास कुछ और क्लासिफिकेशन है। क्यों कर रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड दैट, बिकॉज ये वर्ड से ना बहुत खेलता है। सो पहला क्या है हमारा? एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक, एपिजेनेटिक, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन से हो गए? डिग्रेडेशनल एंड एग्रेडेशनल। ट्रू। अच्छा, अब इसमें ना दो तरह के स्लोप बनते हैं, A and B. कहने से both A and B are epigenetic slopes. ठीक है? In which case you will find A and B. Everyone, please apply your mind. You will actually go and touch. Take a hammer with you. Go and touch. Where will you actually find the actual rock? And which slope will have rock hidden somewhere, but on the top there will be sediments. Which one is actual rock? जाके hammer मारेगा तो rock आएगा ऊपर। Sir, A is actual rock sir. वो तो cliff है ना, वो उसका ही तो part टूट कर नीचे गया है। A is actual rock, everyone. And which one is the B? B is the sediment sir. So, क्योंकि हम तो स्लोप की बात कर रहे हैं, we are talking about the slopes. So what I am trying to say here is that these slopes have also been classified as rock slope and soil mantled slope. चलेगा? Is everyone with me? Can I say this is rock slope and this one is soil mantled slope? रॉक स्लोप क्या है? स्टीपर, मुझे काफी स्टीप दिखाई दे रही है, और ये मुझे क्या दिखाई दे रही है? जेंटल दिखाई दे रही है। कैन आई से रॉक स्लोप इज जनरली बेयर? बेयर मतलब उस पर कोई सॉइल नहीं है। क्यों नहीं है? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट सर? बिकॉज इट इज स्टीपर, कुछ उस पर रुकता नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज देयर। इज एवरीवन ओके विद दिस? ट्रू। अच्छा, एक और चीज मैं करना चाहता हूं इसमें, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। कैन आई से दिस इज अ स्लोप, दिस इज अ स्लोप वेयर erosion is higher, and this is a slope where deposition is higher. True or not? तो ये याद रहेगा भी, soil mantle slope and rock slope. Can you remember that also? तो slope क्या, जो भी अभी तक हमने types of slope में चला। अब एक next topic, and I am sorry if this is boring. Please थोड़ा सा आज मैंने कहा ना theoretical advance में ये सब मुझे आगे use करने होंगे, so I'm trying to relate it as much as possible. Elements of a slope. कुछ टर्मिनोलॉजी है, कल की क्लास में मुझे वो यूज करनी, आई हैव टू यूज देम, सो दैट इज व्हाई आई हैव टू डू दैट। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ स्लोप? तो एक स्लोप बनाता हूं मैं पहले। इज एवरीवन ओके? लैंड फॉर्म पॉसिबल नो? स्लोप्स आर देयर। अब मैं इसमें पहली स्लोप करना चाहता हूं, नंबर 1 एलिमेंट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, नंबर 1 आई वुड कॉल इट द कॉन्वेक्स स्लोप। Convex slope. Is everyone with me on this? Convex slope. Can you identify and tell me which one is convex? 5. Okay. Can I call this, क्योंकि वो ऊपर है, can I call it the crest slope? Can I call it the crest slope? So जो slope ऐसी होती है वो convex होती है। इसमें थोड़ा सा I want to tell you that this is found at the top, found near hill summit. ये often कहां पर मिलेंगे? हिल के summit. Summit is the top. It will generally be found over the hill summit. ठीक है? Some geologists have said that this is there because this force dominates, and this has been lowered because this force dominates. Can you guess what is the secret behind a convex slope? Can I say convex slopes are created where endogenetic forces are more than exogenetic forces? चले दूसरा देखते हैं, दूसरा लेटेस्ट लुक एट
concave slope. Concave slope. Concave slope. So जल्दी से देखिए बताओ concave कौन सा है? Sir, one is concave. Okay, very good. Concave is this. So concave is this slope, slope number 1. Can I say found at the bottom of hill or highland? And इसमें बहुत ज़्यादा high है. Which one is higher? Exogenetic forces are predominant than endogenetic forces. Is everyone okay? एक बात बताओ everyone. Tell me one thing. There is a flat land. What is the slope of flat land? What is the slope of flat land? 0. Because of endogenetic forces, it rises like that. What is the slope now? Anyone? Any guesses of the angle? So 30. Now, so 45. Now 60. So what is happening to the slope if endogenetic forces are pushing up? What is happening to the slope angle if endogenetic forces are pushing up? Increasing. So जब moon का जब बड़ा होता है moon, remember moon is from full moon, फिर half moon, फिर no moon. उस phase को reducing moon is called waning and increasing moon is called waxing. So from that moon terminology, can I call convex slope as waxing slope? Angle बढ़ रहा है और ये जो ऐसा था ऐसे से नीचे आ गया. So can I say concave slope is waning slope? चलेगा? So by slope number 5 done, slope number 1 done, slope number 5 and 1 are done. ये इतने सारे बीच के slopes क्या है? What are बीच वाला slopes? बीच वाला slopes are called straight or constant slopes. Is everyone okay? Straight or constant slope चलेगा? Everyone with me on this? Straight or constant slope? अच्छा. What are straight or constant slopes? Sir, 2 is straight, 3 is straight, 8 is straight. अच्छा ये बताओ मुझे 7 को भी तो हम actually concave में रख सकते हैं. Flat हो गया, low हो गया ना? लेकिन ये वैसे मैंने erosion बनाया नहीं, but 7 भी हो सकता है. Anyways, तो straight slopes में can I say the forces must be balanced? तभी ऐसा हुआ है. Yes or no? Can I say endo is equal to exo? But straight slope में everyone, straight slope में I have something coming in here. Number 4, remember number 4 versus number 3. What is the difference? What is the difference? So one is a rock slope. Other is a soil mantled slope. इस slope को क्या बोलते हैं? Straight, rectilinear या फिर debris slope. इसको क्या बोलते हैं? Free face slope. Debris slope, straight slope, rectilinear slope. Straight और rectilinear यहाँ ले लो, बल्कि ऊपर कर दिया आपने. So let us call this as debris slope. Can I call this as debris slope? And इसको हम क्या करें? Straight और rectilinear slope. Everyone okay? Tomorrow's class we will be doing theories of slope evolution. Theories of slope evolution will happen tomorrow. I hope you can understand slope evolution is nothing but landscape development. Yes, different people, different theories. Say for example, one will be slope decline theory. Slope decline theory. ये WM Davis का है. Slope angle will decline. Okay, Monday को सर्कल छुट्टी है. ठीक है, Monday को करेंगे. तब तक आप अपना vocabulary कर सकते हैं. Everyone who did not do the basic classes, can I expect you to do your landforms, landform erosion, sorry not erosion, denudation करके आ जाइए please. Denudation के जितने भी components हैं कहाँ से करेंगे? GC Leong से कर लेंगे. So what is denudation? Weathering, all types. Yes. Mass wasting आज पढ़ा दिया आपको. Transport deposition आप कर चुके हैं. Please make sure you do that. Slope decline theory, slope replacement theory, parallel retreat theory. ये सारी theories मैं आपको कराने वाला हूँ. Slope decline, slope replacement and everything that is going to happen. I will request people who have done the basic geomorphology के 4 lectures उनको revise कर लीजिएगा. Not that these areas will be needing them, but your understanding, your real life visualization will come from that. And I hope you can understand थोड़ा theoretical वो है, but theory के साथ as I took one theory एक base भी लूँगा. तो संडे को कोई क्लास शेड्यूल किया है कि नहीं? सर्वेश्वर बहुत सारे बच्चे बहुत दुखी थे पिछले संडे को IIT और हॉलीडे. And I also want everyone to like we are starting advanced geomorphology. So अपना geomorphology को पकड़ के चलिए. Get that? Make sure you catch that. The way we have done in climatology, we want strength to come into that. Areas वो है. तो कल आपकी कोई क्लास नहीं. सर स्लोप एंगल 0 होगा तभी कल्टीवेशन पॉसिबल होता है. ये कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया? आपको लगता है एग्रीकल्चर के लिए एकदम फ्लैट लैंड होना चाहिए? एवरीवन, दैट इज व्हाई आई से ना ब्रेनस्टॉर्मिंग रियल वर्ल्ड से.
वो किसी ने कहा स्लोप एंगल 0 होगा तभी कल्टीवेशन, आपने देखा खेत ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। विद इन अ फार्म थोड़ा ऊंचा नीचा, ऐसा मत करो यार, बिल्कुल एनआरआई टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो। टेरेस फार्मिंग तो मुझे समझ में आता है, बट मैं कह रहा हूँ ऐसे ढलान पे भी तो हो सकता है खेत, कैन देयर बी अ स्लांट और नॉट? बट यस द प्रॉब्लम इज उसमें वाटर नीचे जाएगा तो सारे क्रॉप्स को नहीं आएगा, तो वी विल हैव टू डू समथिंग ऑफ दैट। सो लेवलिंग एंड ऑल दैट इज टू बी डन, बट थोड़ा सा स्लोप बिल्कुल हो सकता है। Within this thing there are ups and downs, so I hope you understand contour agriculture, terrace agriculture, land leveling, all those things, so those are there. So I hope advanced geomorphology we have made a good start. आज I'm really expecting on the weekend सब लोग अपना mass wasting landforms वाला, landforms का listing भी हम कर चुके हैं, this class has already done the listing, that was a good job. डिक्शनरी का काम करिए, ये करिए, और जो लोग कर रहे हैं प्लीज ट्रस्ट मी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट बॉदर अबाउट अदर्स, डोंट बॉदर अबाउट अदर्स, यू आर गेनिंग, यू योरसेल्फ नो कि हाँ यार मेरा कंटेंट भी तैयार हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग आई कैन अप्रिशिएट व्हाट सर इज सेइंग, आई कैन आल्सो ट्राई राइटिंग सम आंसर्स, मेनी अपॉर्चुनिटीज विल कम, कीप ग्रोइंग, you are a benchmark against yourself, and when it comes to the group benchmarking, that leave it to me, I will do that also. Okay, so thank you, see you on Monday, and Monday 8 a.m. Monday 8 a.m. फिर से बता रहा हूँ, Monday 8 a.m. I'm starting with environment, so for GS environment join me over there, GS classes. Thank you, bye bye.